however, there is no doubt that Gupta Empire was a time of great cultural and achievement. ये तो इसको मानते, great तो है, golden है कि नहीं ये doubt है. So this is a typical answer. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. But I want to make use of that and introduce you something else which is more important for you from the exam viewpoint. When you talk of golden age, you talk of political, economic, social, and cultural advancement collectively in all spheres of life. So now we can argue that it was not actually completely golden age. It has elements of greatness, but it does not mean it is golden for everybody. It has limitations. ये तो हमारा conclusion हो गया. But even if that is so, you have to understand there is something else that is only about culture. Golden age as a term may be suspect, but culture was at its one of the peaks. इसके बारे में कोई doubt ही नहीं है. So we use a different term for that, and that is classical age. Now, golden and classical are two related, but थोड़ा सा different. Classical age is primarily only about culture. You can talk of culture plus religion over here. Culture plus religion. What does it contain? When I say this era is classical era, मतलब क्या movie classic movie थी? So what is classical? I will give you 7 points for the meaning of classical, one by one, और वो 7 points रट लो आप. They will be extremely useful because whenever a question comes from any part of Gupta era, Ajanta painting, Sarnath sculpture, anywhere you go to Gupta era, those 7 points will be as themselves applicable as descriptive features. ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ लो मीनिंग ऑफ क्लासिकल. फर्स्ट पॉइंट, अगर फर्स्ट 3 पॉइंट जो है वो आपका है आईएएस. वो आसान रहेगा याद. आई डोंट जनरली डू नेमोनिक्स इन माय क्लास, बट यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा. आईएएस का मतलब है इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल. ठीक है. सो गुप्ता एरा आर्ट is intellectually informed. कालिदास is not vulgar. उसमें एक intellectual aspect है. सारनाथ बुद्धा में एक intellectual aspect है. Then you go for aesthetic. So aesthetically also quite refined. आपका जो रस परिपोष होता है, रसा creation, रसा निष्पत्ति is that level of aesthetics is very good. I'm just trying to give you adjectives to use in the answer in a way. And then spiritually, see, it is very much evolved. ये 3 point हो गए. Then you go for the 4th point. That and these points are applicable. Let us say a question comes on only Sanskrit literature of Gupta era. यही points है आपके. Examples change होते जाएंगे. कालिदास कभी आएगा कुछ और आएगा. Example aesthetic, intellectual, spiritual, and then other points also. Then you talk of next point कि it informs all the art forms. That is important for you to understand. Generally, there is exception also. ऐसे कभी नहीं होता कि literature peak पे है, painting नीचे है. If it is aesthetic, intellectual, spiritual, patronage and ethos of the society, it will inform almost every art form. So every classical age में हर there is exception also, but every other art form is at the peak. तो पेंटिंग भी होगा, अजंता पेंटिंग, स्कल्पचर, सारनाथ स्कल्पचर, लिटरेचर, कालिदास. यू हैव 3 बेस्ट एग्जांपल्स. एक्सेप्शन है वो है टेम्पल्स. टेम्पल्स की जस्ट शुरुआत हुई है. सो इट इज नॉट द क्लासिकल एज फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल का क्लासिकल एज आएगा इन द अर्ली मेडिवल, राजपूत एरा. सो दैट इज एक्सेप्शन, नागर स्टाइल का. बट फॉर एवरी अदर आर्ट फॉर्म इट इज द so all art forms. And then you have to go for next thing, that is harmony. It is the most difficult aspect. Generally some art forms like Gandhar more focus on physical aspects. Muscle कितने बने हैं, anatomical accuracy कैसे है, is it realism or not. So that is a Gandhar style, focus on the material aspects. If you come to Mathura,
फिजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान होगा नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इनर स्पिरिचुअल ब्यूटी. So Mathura versus Gandhar dichotomy of the early centuries, that is the post-Mauryan age, जो थी material versus spiritual, वो resolve हो जाएगी. If you go to Sarnath, you see दोनों का harmonious balance हो गया है, which is the most difficult thing to do, वो balance maintain करना. So intellectual and spiritual, material and sublime, material and spiritual का balance है यहाँ पे. ये बहुत बड़ी बात है गुप्ता एरा की, जो गुप्ता एरा के बाद में नहीं रही थी. And then you have last point यहाँ पे, actually 5 नहीं 7 नहीं 6 points है कि standard. It is a very important idea. When you say classical, it means it creates a standard or benchmark of assessing beauty for future. उसके बाद जो कोई कवि आएगा, कविता कैसी है? कालिदास की तरह. तो कालिदास उपमा कालिदासस्य, he created a standard benchmark for future assessment कि भाई सुंदर किसको कहते हैं. बुद्धा का स्कल्पचर कौन सा बढ़िया? सारनाथ का. So you create a definition of beauty by which all the future art forms are judged, कि उसके नजदीक जितना जाएगा उतना सुंदर, वरना नहीं. Right? So you create a standard benchmark for future art forms. When you have all these things, then you call it classical. Let me additionally tell you one more thing. थोड़ा सा यूरोपियन आर्ट हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, आप दिखा भी सकते हो वैसे किसी किसी आंसर में. यू हैव एन इन्वर्टेड बेल कर्व लाइक दिस और नॉर्मल बेल कर्व. यहाँ पे कोई भी आर्ट फॉर्म, दिस इज अ टाइम लाइन एंड दिस इज रिफाइनमेंट. Whenever art form starts, it starts somewhere at the beginning. You have primitive art form. Let us say a painting. So if you go to prehistoric painting, they are primitive. They are not very refined. Then you go for next stage, that is experimental. यहाँ पे you experiment a lot to arrive at some kind of harmony. Harmony नहीं achieve हो रही है. So whatever you have in the post-Mauryan era is experimental. In sculpture, for example, you would have Mathura and Gandhar, Amravati, experimental है. Then emerges classical. Classical में you ultimately reach that point, जो कि peak है, जो गुप्ता एरा में आता है. Then you go for Baroque. It is European classical sense, not in Indian, but आपको आइडिया लग जाएगी. Baroque में होता क्या है? In classical आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया, तो you created codified canon of proportions, of beauty, of processes. इसको फॉलो करना है. तो next succeeding generation start following it as if it's a template जो हम तोड़ नहीं सकते. तो inner vitality is gone, spiritual harmony is gone, but form रहता है. तो थोड़ा सा वो baroque, grotesque टाइप होता शुरू हो जाता है. तो वो फिजिकली सही है, बट अंदर की आत्मा चली गई उसकी. ओ, मतलब डेकोरेशन कभी कभी एक्सेसिव हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्ली medieval लिटरेचर यू फाइंड वेरी टेक्निकल रिफाइंड संस्कृत लैंग्वेज, बट जो बैलेंस था कालिदास का वो नहीं रहा, तो वो बरॉक हो गया. धीरे धीरे अधिक ज्यादा डेकोरेटेड, टेक्निकलिटी बहुत हाई है बट इनर रिफाइंड बैलेंस नहीं है, एंड देन यू हैव डिक्लाइन. सो व्हेन यू से Gupta era is classical, it's classical for literature, it is classical for painting, it is classical for sculpture, but not for architecture. For architecture and especially temple, it is still over here. Architecture थोड़ा सा फेज लैग में चल रहा है. गुप्ता के 500 साल बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, तब तक बाकी आर्ट डिक्लाइन हो गए होंगे. So whenever you write a question Gupta classicism, do not mention temple. वो एरर मत करना, ठीक है? But you got the idea. So these are the elements of classicism. So what you can say is that even though, if you want to write a different conclusion, even though Gupta era का goldenness is suspect, what is not suspect is its classicism. वो तो है ही है. So in political, economic, social, we may have doubt of the extent of greatness, but in cultural, we have no doubt. So golden है कि नहीं ये अलग, क्लासिकल तो है, ठीक है?